Hello everyone. So today we are going to start with a new chapter, that is remainder theorem and factor theorem. उसमें से एक remainder theorem का part I am going to consider right now. So to begin with, we are starting with the chapter remainder theorem and factor theorem for ICSE 10th standard. इसमें से दो parts है, remainder theorem and factor theorem. So this is specially for the children जिनका पढ़ाई कम हुआ है. So this chapter is something that will give you at least 4 to 5 marks. That is for sure. राइट. सो ये 4 to 5 टू मार्क्स आपको आसानी से देने वाला है. बहुत ही आसान चैप्टर ये हम लोग कर रहे हैं. वेरी बेसिक 2 to 3 कॉन्सेप्ट्स आर टू बी डन और उसके ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चंस हर साल आते हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि ये चैप्टर आपको किसी भी हालत में करना ही चाहिए. ऑलराइट. सो नाउ लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. उसके लिए थोड़ा सा बेसिक्स भी करना जरूरी है. वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स जो आपने 8th and 9th स्टैंडर्ड में किया था. Let me start with which I'll share my screen first. All right, I hope the screen is visible for you right now. All right, so just before we start with the remainder theorem, एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट वी शुड नो व्हाट इज समथिंग बेसिक्स जो हम लोग ने 8th and 9th स्टैंडर्ड में किया था. ये जो मैं कॉन्सेप्ट्स कर रहा हूँ ये सीबीएसई वालों ने भी किया है 8th and 9th स्टैंडर्ड में. राइट. पॉलिनोमियल्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिनोमियल्स इज, सपोज इफ आई राइट समथिंग इन द फॉर्म ऑफ a0 x raised to n plus a1 x raised to n minus 1 plus a2 x raised to n minus 2. ओके. प्लस ऐसे करते 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 हम लोग आगे बढ़े एंड वी गेट समथिंग a raised a n minus 1 x एंड द लास्ट टर्म इज a n. अगर ये हम लिख पाते हैं, देन दिस, if it is denoted with the form of p of x, then this is called as polynomial. This is called as polynomial. ऑलराइट. पॉलिनोमियल के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर ये पॉलिनोमियल के छोटे छोटे पार्ट्स भी हम अगर कर रहे हैं तो एवरी पार्ट इज अ पॉलिनोमियल. एवरी पार्ट बिकम्स अ पॉलिनोमियल. रिमेंबर दिस, एवरी पार्ट इज अ पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ इतना ही पार्ट कंसिडर करता हूँ, ओके, देन इन दैट केस अगर मैं an के बदले a लिखता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, but still it is a polynomial. Remember that polynomials, poly is many, right? So many terms are there. So if I write the first two terms, ये term अगर मैं consider करता हूँ तो ax, okay, plus b, then this is called as linear polynomial. Linear polynomial. Now one more thing we need to understand here is degree of a polynomial क्या होता है? Degree of a polynomial. So what is a degree of a polynomial? Degree is nothing but the highest power of x. Highest power of x यहाँ पे कितना दिख रहा है? Highest power is n. Hence degree कितना है इधर? Degree का value है यहाँ पे n. The degree of a polynomial is n in this case. So when the degree is 1, it is called as linear polynomial. हमने पिछला वाला चैप्टर किया इस टाइप का. This is also a polynomial. So this chapters are related chapters. ax square plus bx plus c. Right. Now if you see, the highest power in this case is 2, and this case it is called as quadratic polynomial. This is called as quadratic polynomial. Then if the degree is 3, this is the highest power, then it is called as cubic polynomial. This is called as cubic polynomial. And lastly, if the degree is 4, ज़्यादा नहीं आगे जाएंगे, if the degree is 4, this is called as a biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial. So this is biquadratic polynomial. राइट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज, अगर एक पॉलिनोमियल के छोटे छोटे टुकड़े भी कर दो, देन अगेन वी गेट व्हाटएवर इट इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल. Right. So this is the first thing you need to understand. The second thing you need to understand over here is about the polynomial is, यहाँ पे जो polynomial मैंने लिखा है वहाँ पे a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, up to
अप टू अगर हम जाते हैं A3, अगर इधर लिखते AN-1, ओके, दिस आर कॉल्ड एज कोइफिशिएंट्स, दिस आर कॉल्ड एज कोइफिशिएंट्स ऑफ किसका कोइफिशिएंट है, A0 का अगर हम कंसीडर करें तो दैट इज द कोइफिशिएंट ऑफ x रेज टू n, A1 को अगर कंसीडर करें देन दैट इज द कोइफिशिएंट ऑफ x रेज टू n-1, A2 की अगर बात करें तो दैट इज द कोइफिशिएंट ऑफ x रेज टू n-2, ऐसे करते करते लास्ट वाला जो n-1 है वो किसका कोइफिशिएंट है, x का है रिस्पेक्टिवली, ओके, रिस्पेक्टिवली दीज आर द कोइफिशिएंट्स, ओके। इसमें सबसे फर्स्ट जो है an, मतलब सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है A0 x रेज टू n, ये जो टर्म है दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग टर्म। सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म जो होता है उसको कहते हैं लीडिंग टर्म। So if you talk about this is the leading term. If you talk about quadratic, this is the leading term. If you talk about cubic, this is the leading term. If you talk about biquadratic, this is the leading term. तो leading term क्या होता है, जिसका x का जो वेरिएबल का जो डिग्री सबसे हाईएस्ट है, मतलब पावर जिसका सबसे हाईएस्ट है, वो वाला टर्म को लीडिंग टर्म कहते हैं। एंड A0 उसका जो कोइफिशिएंट है उसको कहते हैं हम लोग लीडिंग कोइफिशिएंट। सो दिस आर सम बेसिक थिंग्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। Once again, this is nothing but a revision of what we have done in 8th or 9th standard. This is called as leading coefficient. All right. Now, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. Okay. Then, next point. Right. अभी, if I want the value of the polynomial, value of the polynomial at x equal to a. How do we find out the value of a polynomial at x equal to a? Polynomial का value at x equal to a कैसे निकाला जाता है? Simply it is done by replacing, जिधर भी आपको उसमें x दिखाई दे उसके बदले हम लोग a substitute करेंगे, replacing x by a. राइट देखो x के बदले क्या सब्सटीट्यूट करना है, a सब्सटीट्यूट करना है, बिकॉज x इज इक्वल टू a. सो वी जस्ट रिप्लेस x by a and we get the value of the polynomial at x is equal to a. Then the last term, right, that is called as division algorithm. ये हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, but I'm right now talking about polynomial, division algorithm of polynomials या फिर for polynomials. Okay, let me make you understand. Here हम लोग ने we are doing this right from our childhood. Okay, so what is the division algorithm of polynomials? Before that, let me make you understand. Suppose like आपने बचपन में 7 को 3 से डिवाइड किया था. So 7/3 जब हम करते हैं, then this 3 2s are 6 यहाँ पे आएगा and we get the remainder as 1. Right? Then let me make you understand that जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड. जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड. जो मेरा आंसर आया है उसको हम लोग कहते हैं कोशेंट. उसको हम लोग कोशेंट कहते हैं. और जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज अ डिवाइजर. और जो बाकी बचा है that is called as a remainder. Right? So we have been doing this right from our childhood. So similarly, अगर मुझे यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स है, एक है p of x अपॉन दूसरा पॉलिनोमियल है q of x, मतलब p of x को हम लोग q of x से डिवाइड कर रहे हैं, then this is called as dividend and this is called as divisor. और रूल क्या है इसका, रूल क्या है इसका, एल्गोरिथम क्या है? यहां पे भी आप देखो, यहां पे भी आप देखो, रूल इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर.
ऑलराइट, सो यू कैन सी हियर, अगर आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल जो लिया था, डिविडेंड कितना है 7 है, राइट, डिवाइजर है 3, कोशेंट है 2, रिमाइंडर है 1। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालो तो 3 इंटू 2 6 होता है, 6 प्लस 1 कितना होता है 7। सो दिस रूल इज अप्लीकेबल एवरीवेयर वेयर डिवीजन इज डन। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। Okay, now let's go on to the actual remainder theorem. So I want you to understand this first. यहाँ पे polynomials क्या होते हैं, polynomials की डिग्री क्या होती है, डिग्री is the highest power of the variable. Then types of polynomials we have considered, coefficient किसको कहते हैं, leading term, leading coefficient, value of p of x, that is a polynomial at x is equal to a. All right, now the actual remainder theorem, which is today's topic, remainder theorem. ठीक है, इसका थियरम, रिमाइंडर थियरम क्या कहता है, वेरी सिंपल, अगर इफ अ पॉलिनोमियल, इफ एनी पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड बाय सम लीनियर पॉलिनोमियल, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली बाय लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज x minus a, right, the remainder is, in that case the remainder is p of a। कहाँ पे सीखा था हम लोग ने, यहाँ पे सीखा था, राइट। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि इधर अगर रिप्लेस करते हैं जो वैल्यू मिलता है उसको हम कहते हैं p of a, राइट। सो हाउ डू वी फाइंड आउट p of a, बाय जस्ट रिप्लेसिंग x by a। अब ये a कहाँ से आया ये समझ के लिए, राइट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट a, वो कहाँ से a लेके आया मैं। सो इट इज लाइक दिस, मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया बताता हूँ, बिकॉज आगे चल के जब प्रॉब्लम्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी समझने के लिए। ये a कहाँ से लेके आया, जब मैं x माइनस a से डिवाइड कर रहा हूँ, व्हेन आई एम डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाय x माइनस a, तो सिंपली x माइनस a को 0 ले लो तो x का वैल्यू कितना हो गया a। और यहां से मुझे समझ में आया कि मुझे क्यों निकालना है p ऑफ a, बिकॉज x इज इक्वल टू a लेना है यहाँ पे। तो अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो दो चीजें अभी देखो, इफ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय, सो दिस इज समथिंग विच आई एम टेलिंग यू, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड क्या करना है तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं क्या करना चाहिए। तो सपोज x प्लस a से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा, अगर वो समझ में नहीं आता है x का वैल्यू क्या लेना है तो मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूं, x प्लस a की वैल्यू हम लोग a 0 लेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू माइनस a, हेंस द रिमाइंडर इज p of minus a, the remainder is p of minus a। Similarly, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लीनियर क्वांटिटी अगर डिवाइड कर रहा है, सो इफ p of x is divided by a linear quantity ax plus b, then what will happen in this case, the remainder is what will be the remainder in this case, suppose ax plus b इससे divide कर रहे हैं, I'm dividing by ax plus b, that is the divisor, I'll take this ax plus b as 0, that means ax is equal to minus b, right, and x is equal to minus b upon a, hence for remainder I will just find out p of minus b upon a, p of minus b upon a, right? So the basic theorem says that if a polynomial is divided by x minus a, the remainder is p of a. Where do I get a from? So I take x minus a is equal to 0 and hence x is equal to a. Hence I'm replacing x by a. Let's move on to the problem. There are few problems which were asked in the exam. These are problems which are asked in ICSE exams, right? So using remainder theorem, find the value of k if on dividing this polynomial by a linear quantity x minus 2 leaves a remainder. Now he says that the remainder is 7. अपने को ये एक unknown value है k का, वो निकालना है, right? Now he says that p of what value is 7. Okay, now see, if I don't understand this, simply मैंने आपको एक आइडिया बताया, x minus 2 is equal to 0 ले लो, because इससे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं।
then what is the value of x? X is equal to 2. That means I am going to consider p of 2 as equal to 0, right? Before that, I'll write this p of x. Let p of x जो है that is equal to 2x cube plus 3x square minus k of x, k into x plus 5, right? And just like I told you right now, he says that the remainder when it is divided by x minus 2 is 7. This is given in the question, right? How do we find out p of 2? Very simple. जहां पे भी आपको x दिखे आपको 2 से रिप्लेस करना है. तो यहाँ पे x क्यूब था, मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 क्यूब प्लस 3. यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, आई विल बी राइटिंग 2 स्क्वायर. तो जहां पे भी आपको x दिख रहा है वहां पे आपको लिखना है 2. सो k इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. राइट नाउ 2 into 2 का cube, the cube of 2 is 8, all right, plus 3 into square of 2, which is 4, minus 2k plus 5 is equal to 0. So this is 16 plus 12 minus 2k plus 5 is equal to 0. If I add the constant term, so 16 plus 12 is 28, and 28 plus 5. Remember, 16 plus 12 is 28, and 28 plus 5 is 33 is equal to 0. So we have minus 2k is equal to minus 33, and hence the value of k is 33 upon 2. So this is the first problem. Very simple, and this problem is going to give you 3 marks. Right? When it was asked, it was there for 3 marks. So now thoda sa complicated karke diya hai, but the question is very easy once again. When it is divided by x minus 3, jab x minus 3 se divide hota hai, तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए? Then the value of x has to be 3. The value of x has to be 3. This is the first thing you need to understand. The polynomials, there are two polynomials, polynomial number 1, polynomial number 2, and in both the cases they leave the same remainder. Find the value of p, that is first thing. Then also find the remainder in each case. Okay, let us understand. Now, because it is divided by x minus 3, I understand that x का value मुझे कितना लेना है? 3 लेना है. So in my first case, first polynomial, let me say that p of x is x cube minus px square plus x plus 6. Now he says that because it is divided by x minus 3, the remainder will be remainder. जो इसका रिमाइंडर है that will be p of 3, because यहाँ पे हमने देखा because it is divided by x minus 3, तो x की वैल्यू कितनी लेनी है? 3 लेनी है. कैसे करना है? बस कुछ नहीं, जिधर भी x दिखे, wherever you see x, replace it by 3. So this is 3 square plus 3 plus 6, right? So 3 का cube, that 3 cube is 27, 9p plus 18, and now 27 plus 18 is 545 minus 9p. Okay, let me check if anything. 9p, oh, I'm so sorry, there is a small mistake over here, because 6 plus 3 is 9, right? And here let me make the corrections. 29 plus 27 plus 9 is 36 minus 9p. All right. Now, let another polynomial which is there, okay, that I'll name it as q of x, because दोनों को same नाम नहीं दे पाएंगे. This is 2x cube minus x square p plus 3 into x minus 6. All right. Now, because remainder here, because it is also divided by x minus 3, the remainder in this case will become q of 3. How do we find out q of 3? Simply by replacing, wherever you find x, you replace it by 3. So this is 2 into 3 cube minus 2 square minus p plus 3 into 2
minus 6. So this is 27. 2 into 3 cube is 27. Okay. One more thing. Can you see this? A very small mistake I am making, and that may make the problem wrong. Right? So we have to be very careful about this. Minus 9 minus, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हो, 3 into p is 3p and minus 3 इधर minus 9 हो जाएगा and that is minus 6. All right, now this is 54 minus 9 that is 18. All right, and this is 18 and 6 that is minus 24 minus 3p. So here I get 30 minus 3p. So I found the remainders by using remainder theorem when it is divided by x minus 3. Right? Now he says when it is divided by x minus 3, it leaves the same remainder. It leaves the same remainder, मतलब इसका remainder और इसका remainder दोनों same है. That means p of 3 is equal to q of 3. This is again, ये मेरी मर्जी से नहीं चल रहा है. This is given in the problem. All right. Now 36 minus 9p is equal to 30 minus 3p. These are the remainders we have already found out here. You can see here. Right? So 36 minus 30 will be equal to minus 3p plus 9p. Okay, 9p minus 3p is 6p. 36 minus 30 is 6. That means p is equal to 6 upon 6 and hence p is equal to 1. ये हो गया first part. Find the value of p. We found out the value of p. All right. Now the question is also find the remainder in each case. Okay. Now remainder in each case, that is p of 3. First case, remainder is, first case is 36 minus 9 into p, that is 1. Remember 36 minus 9p, p का वैल्यू मेरा 1 आ चुका है. तो 36 minus 9 is, सिंपल सी चीज है. 36 माइनस अगर 10 करता हूं तो 26 आएगा, प्लस 1 करना होगा मुझे. सो द फर्स्ट आंसर इज 27. q of 3 मतलब सेकेंड पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जो है दैट इज 30 minus 3p. All right. Now, in this case, this will be 30 minus 3 into 1. That is equal to 30 minus 3 is 27. यहाँ पे भी 27 आ रहे हैं, which is expected. You know what? Why? अगर ये नहीं होता तो कुछ गड़बड़ हो जाता. दिस इज अ साइन, आपको खुद को चेक करना है, बिकॉज इन्होंने पहले ही बताया था कि रिमाइंडर सेम होने वाला है और आपने चेक किया, यहाँ पे रिमाइंडर दोनों केस में 27 आया. राइट, तो आपको ये ख्याल रखना है, वी हैव टू बी इन द प्रॉब्लम 100%. आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ के लेना है. सो एज यूजुअल आई कीप ऑन सेइंग दिस टू थिंग्स. नंबर 1, एक तो आपका वर्ड प्रॉब्लम जो होता है इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नंबर 1, आपको इंग्लिश समझ में आना चाहिए. राइट, इसका मतलब हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, हर एक वर्ड का एक इंपॉर्टेंस होता है, वो समझ के लेना है. एंड द अदर थिंग इज यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, तो रिमाइंडर थियरम यूज कर रहे हैं. ऑलराइट, नाउ let's go to the third problem. Find the value of a if the two polynomials, right, are divided. Leave the same remainder when divided by x plus 3. तो it is a similar problem जहाँ पे यहाँ किया था, but of course यहाँ पे सिर्फ value of a पूछा है. 2015 का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आई एम डिवाइडिंग बाई x प्लस 3, राइट. तो x प्लस 3 ये मेरा रफ वर्क है. x प्लस 3 से डिवाइड कर रहा हूं ना, तो मेरा x का वैल्यू कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए. ये ध्यान में रखना है पहली चीज, राइट. तो लेट मी से दैट जो पहला पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसका मैं p ऑफ x लेता हूं ax³ प्लस 3x² -9. All right, when the first polynomial is divided by x plus 3, right, the remainder, in this case the remainder will be equal to p of -3. क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो हमने x का वैल्यू निकाल के रखा है. ये रफ वर्क हमेशा करना है. दिस इज अ रफ वर्क. ओके, नाउ a इंटू -3 का क्यूब प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वायर -9. Now again
let me remind you that most of the time student make this mistake. यहाँ पे -3 का क्यूब है, that is -27. Remember, it is -27. -3 multiplied by -3 multiplied by -3, right? This everyone knows that -3 into matlab 3 into 3 into 3 is 27, but minus into minus is plus, again into minus is minus, so you have to be careful about this. अच्छा, तो अब यहाँ पे भी वैसे ही होगा, बट -3 का स्क्वायर, रिमेंबर दैट -3 का स्क्वायर कितना है, -3 का स्क्वायर होता है +9 and -9. So this is -27a plus 27 and -9. 27 minus 9 is 18. So this becomes 18 minus 27a. ये पहले वाले का काम हो गया. Now what about the second one? Let me label it as, let me say that another remainder is, another polynomial is q of x. That is equal to 2x cube plus 4x plus a. All right, now I'm going to find out the remainder for this when it is divided by x plus 3. x plus 3 से divide करना है तो आपको x का वैल्यू क्या लेना है, x का वैल्यू लेना है -3. So q of -3, if I'm taking q of -3, right, that will be equal to 2 into -3 का cube, right, plus 4 into -3 plus a. Now remember, -3 का cube is -27. -3 का cube is -27. Plus 4 into -3 is -12 plus a. So this is -54 minus 12 plus a, right? And this becomes a minus 66. A minus 66. All right. Now, रिमेंबर, यहाँ पे क्या बताया गया मुझे, यहाँ पे मुझे बोला गया है when these two polynomials are divided by x plus 3, the remainder remains the same, they leave the same remainder. इसका मतलब p of -3 is equal to q of -3. ये क्या है, this is given in the problem, right? That means 18 minus 27a is equal to a minus 66. That means 18 plus 66 is equal to a plus 27. Variable on one side, constants on another side, right? So we have 28a. 27 plus 1a is 28a, right? And 18 plus 66. So 8 plus 6 is 14, and this is 84. All right. Now, a is 84 upon 28. All right. अगर ज्यादा आपको तकलीफ हो रही है तो 4 7s are 28, 4 21s are, and hence we get a का वैल्यू as 3. This is the question. a का वैल्यू मेरा मिल गया. a का वैल्यू आ रहा है 3. All right. Next question. Now, यहाँ पे दो अपने को पॉलिनोमियल्स थे और एक लीनियर क्वांटिटी था जिससे डिवाइड किया था. यहाँ पे देखो, पॉलिनोमियल एक है, दो लोग डिवाइड कर रहे हैं, राइट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से दैट लेट पॉलिनोमियल p of x is equal to x cube plus k of x plus 8 into x plus k. All right. Now, listen to this very carefully. Let me first read the question because मैंने question नहीं पढ़ा था, मैंने सीधा काम चालू किया था. All right. तो using the remainder theorem, find the remainders. पहले तो remainders निकालने को बोला है. Obtained when this polynomial is divided by x plus 1 and x minus 2, right? Then hence find k if the sum of the remainders is 1. This is very interesting. राइट इसके बारे में बाद में बात करते हैं. लेट अस फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट. व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x का वैल्यू क्या लेना है? व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x प्लस 1 को 0 लेना है तो x का वैल्यू क्या लेना है मुझे? -1. अगेन कमिंग बैक टू दिस रिमाइंडर, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? p of -1. ऑलराइट. नाउ
This is when divided by x plus 1, राइट. सो इफ आई टेक दिस एज -1, x जिधर भी x दिखे ना -1 लिखो, प्लस यहाँ पे देखो, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस ब्रैकेट. मैंने बड़ा ब्रैकेट कर दिया यहाँ पे, k इंटू एक्स का वैल्यू है -1 प्लस 8 इंटू वापस बाहर x का वैल्यू है -1 एंड प्लस k. ऑलराइट, बी केयरफुल, दिस इज -1 प्लस यहाँ पे आई एम राइटिंग दिस 8 फर्स्ट. k into -1 is minus k and बाहर -1 है plus k. All right. Now -1 into 8 is -8. -1 into -k is plus k. And again बाहर एक plus k है. So my remainder is 2k minus 9. Right. This is the first case. Second case, remainder. Under the condition it is divided by x minus 2. So if I'm dividing by x minus 2, what should be the value of x? x minus 2 का वैल्यू अगर 0 ले रहा हूं तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए? x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए. x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए. राइट. नाउ x का वैल्यू अगर 2 लेता हो, राइट, तो क्या हो जाएगा? मेरा रिमाइंडर हो जाएगा p of 2. क्या करना है p of 2 में? जिधर भी मुझे x किया, आई हैव टू रिप्लेस इट बाय 2. Alright, so 2 cube plus, let's be very careful, बड़ा ब्रैकेट बनाया, अंदर 2 plus 8 and outside there is 2 plus k. Alright, now value of 2 cube is 8 plus 2k plus 8 multiplied by 2 plus k. Now that is equal to 8 plus 2 से multiply कर रही है ब्रैकेट को, it is 4k. It is 4k plus 16 plus k. All right. Now that is equal to 24 plus 5k. 24 plus 5k. There are two remainders now. अब आते हैं इस प्रॉब्लम पे फिर से. Hence find the value of k. k का वैल्यू निकालना है. दोनों जगह पे k अपने को अननोन दिख रहा है. k का वैल्यू निकालना है. If the sum of the remainders is 1, sum of the remainders is 1. All right, which means ये बताना चाहते हैं p of -1 प्लस p of 2, ये दोनों है रिमाइंडर्स, और इनका जो सम है दैट इज इक्वल टू 1. राइट. सो p of -1 है 2k minus 9, ये हो गया पहला वाला. p of 2 है 24 plus 5k, right, is equal to 1. Be careful. 5k plus 2k is 7k. 5k plus 2k is 7k. All right. Now 24 minus 9, 24 minus 9, minus 9 से सब्ट्रैक्ट करने का आसान तरीका मैंने बताया था. 24 से 9 सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बदले 10 सब्ट्रैक्ट करो. 24 minus 10 is 14 and plus 1 which is 15. दिस इज द इजीएस्ट वे. अदरवाइज नहीं समझा मैंने क्या बताया, आप अपने तरीके से जाओ. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरा तरीका ये है, 9 से सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले 10 से सब्ट्रैक्ट करो जो आसान होता है, और फिर +1 करो. दैट इज द इजी वे फॉर मी. If you are not okay with that, you go with your own methods. Okay, so 7k is equal to 1 minus 15 and 7k becomes minus 14, and finally k is minus 14 divided by 7, which means k का वैल्यू होता है -2. All right, so this is my final answer because the question was just to find out the value of k. Okay, so this is my value of k. All right, now so few important things. Once again, don't just watch the video, notebook और पेन लेके बैठो, कॉन्सेप्ट समझ लो, और जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम्स अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे ये प्रॉब्लम मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो. पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन योर ओन एंड चेक द सॉल्यूशन. राइट. So if you try to solve the problems on your own, what will happen is आप वीडियोस फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं, आपका टाइम भी बचेगा. Right, and that will also give you the confidence to solve the problem. All right, now coming to this problem,
This is the last problem of this video. As I said, इतने ही problems है, right? This was asked in 2020. Very simple concept. Next concept है अपना, next class है अपना factor theorem पे, और 2 classes में ये chapter खत्म हो जाता है, and this chapter is going to give you 4 to 5 marks in the exam. Okay, now coming back to this question, what must be added? थोड़ा अलग किस्म का question है. What must be added to the polynomial? To the polynomial, इसको कितना add करना है so that it leaves the remainder as 10 when divided by 2x plus 1. Okay, ये something different है. When it is divided by 2x plus 1, तो x का value कितना होना चाहिए? x का value होना चाहिए 2x is equal to minus 1, and x का value होना चाहिए minus 1 upon 2. This is something different. For the first time we are doing this, right? So let me come back to the polynomial. My polynomial is p of x is 2x cube minus 3x square minus 8x. Okay, now remainder चाहिए अपने को. It has to leave the remainder. So remainder जो होता है ना, when divided by p, I'm so sorry, not p, when divided by 2x plus 1, right? अगर मैं इसे डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर होना चाहिए p ऑफ, देखो मैंने यहाँ पे x का वैल्यू निकाल के रखा है, x का वैल्यू कितना होना चाहिए? माइनस हाफ, राइट? सो लेट मी फाइंड आउट p ऑफ माइनस हाफ. Right, now let me find out the value of p of minus half. So इधर 2x cube, right? This is 2x cube. तो जहां पे भी मुझे x दिखे, I will have to replace it by minus 1 by 2 cube. Very carefully, problem बहुत easy है. Okay, the only mistakes will be the silly mistakes that you will be doing in the problem, so you have to be very careful. Minus 3 minus 1 by 2 the whole square minus 8 minus 1 upon 2. राइट, नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो माइनस साइन है यहाँ पे, तो क्यूब के बारे में अगर बात की जाए तो माइनस साइन तो वैसे ही रहेगा, राइट? नेगेटिव साइन का जो इवन पावर्स होता है वो पॉजिटिव बनते हैं, नेगेटिव साइन का ऑड पावर्स हमेशा नेगेटिव रहते हैं. आई रिपीट, द नेगेटिव साइन इज, व्हेनेवर द नेगेटिव साइन इज देयर, even powers of negative sign is always positive, and odd power of negative sign is always negative. Even power of negative sign is always positive, odd power of negative sign is always negative. So ये negative रहने वाला है. 1 upon 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 है, 8 2 का क्यूब 8 है, माइनस 3 ऑड पावर नहीं है, इधर इवन है तो ये तो प्लस ही बनेगा. 1 का पावर 2, 1 स्क्वायर इज 1 and 2 square is 4. Now this is minus into minus plus, but at the same time you can see here इधर 4 बनेगा. Now what I am getting is minus 1 upon 4. QSA minus 1 upon 4, you can see here. Then minus 3 upon 4 plus 4. Okay, now this is minus 1 minus 3 divided by 4 plus 4. मैंने पहले वाले दो टर्म्स को साथ में ले लिया, right? This is minus 4 upon 4, and that is a plus 4 is there. All right, now 2x cube minus 8. All right, so this becomes minus 1 plus 4. Okay, and that means p of minus half is equal to 3. क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है यहाँ पे, एंड में आपको यू हैव टू बी केयरफुल. पी ऑफ माइनस हाफ, तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ना सीधा 2x प्लस 1 से, तो मेरा रिमाइंडर तो आने वाला है 3, लेकिन इसको रिमाइंडर क्या चाहिए? 10. तो कुछ तो डिफरेंस होगा इसमें, कुछ तो अलग होने वाला है. सो व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या ऐड करने से मेरा रिमाइंडर 10 आ जाएगा? तो यहाँ पे वी मस्ट ऐड मुझे रिमाइंडर 10 चाहिए, राइट? ऑलरेडी मेरे पास 3 आ चुका है,
तो 10 माइनस 3, राइट, तो कितना डिफरेंस कितना है ऐड करने के लिए? पहले से 3 आ चुका है लेकिन 10 चाहिए, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 टू गेट remainder as 10. This is the final answer, and for this you get 4 marks, right? This was the question asked for 4 marks. So again and again I'm telling you, there will be one question. Most of the time there is one question in MCQs and one question in the main part, so that question will be for 3 or 4 marks. All right, so अगर मैं इसको देखूं तो ओके, अगर मैं ये पार्ट को अगर देखूं ठीक से, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं। ऑलराइट, एंड ये मतलब अपने हक के मार्क्स है। अगर आप प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो दिस आर योर मार्क्स, ये कहीं नहीं जाएंगे ये मार्क्स। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। एंड सो इन द सो इफ यू लुक एट दिस, मैंने नीचे एक अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है इन एनी अदर चैप्टर, फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी ऑन दिस नंबर। ऑल्सो यू कैन सी नीचे जो स्ट्रिप जा रहा है, जो मेरे सेंटर्स के नंबर्स मैंने आपको दिए हैं, दादर सॉरी माटुंगा एंड परेल का सेंटर है, वहाँ के नंबर्स मैंने दिए हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव सम फ्रेंड्स जिनके क्लासेस है, तो एक क्लासेस है गोरेगांव में और एक क्लासेस थाने में। तो अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे भी ऑफलाइन के लिए अगर आपको जाना है डाउट्स पूछने के लिए तो जा सकते हो। परेल या माटुंगा के लिए अगर आपको आना है तो आई हैव गिवन दिस नंबर, right? Feel free to connect on this number, take the appointment, and you can be there for doubt solving, right? So now you can see the numbers of the centers: Parel, Matunga, and Goregaon and Thane. Feel free to connect with me anytime. All right, so wish you all the best for your board exams. See you soon with the next part of this chapter, that is factor theorem. Thank you very much.